Good morning or good afternoon, guys, wherever you are. So I'm going to discuss with you a very important topic. Today is, I would say, one of the most important topics that I've discussed in a while with you guys on YouTube. तो हम बिग डेटा एंड एनालिटिक्स की बात करेंगे. ये आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग टॉपिक्स है. व्हाई? बिग डेटा इज एवरीवेयर, यू नो. Data is everywhere, and so much data that we are now collecting, it has become big data. And पूरा डेटा जब एक साथ आता है, उसको जब हम ठीक से एनालाइज करते हैं, उसको हम एनालिटिक्स कहते हैं. एनालाइज एंड एनालिटिक्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. एनालाइज इंक्लूड्स qualitative aspects, whereas analytics is both qualitative and analyze is both quantitative and qualitative, whereas analytics is pure numbers. उसमें कोई human brain या subjective part नहीं आता. So वो एक major अंतर है इन दोनों में. Still, I would suggest that analytics and this thing has to be understood in a certain context. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस केस में. So what are the future opportunities for students in big data and analytics? ठीक है, चलिए. So on that note, let me begin. My name is Aritra Dasgupta. You all know me very well. I've been with BYJU'S for about 7-8 months now. Started in March. You may have seen my sessions on YouTube and on the app. And of course, right now I'm talking about the analytics part. ठीक है, चलिए. Big data exactly है क्या, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ before I show you the slides. Imagine any object. Imagine this mobile phone. I'm sure you have, many of you may have better mobile phones than me. I don't know. But anyway, take any mobile phone. And इस phone में मैं अभी WhatsApp ओपन कर रहा हूँ. लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर व्हाइल, क्लास के बीच में मैं नहीं करूंगा, बट लेट्स जस्ट अज्यूम मैं अपना WhatsApp खोलूँ. WhatsApp में किसी ने मुझे भेजा गुड मॉर्निंग मैसेज. अभी थोड़ा लेट हो रहा है बट लोग भेज देते हैं, ठीक है. इसको छोड़ के किसी ने मुझे कोई फॉरवर्ड भेजा, कोई जोक. इसको छोड़ के किसी ने कोई जरूरी मैसेज भेजा कि वेयर आर यू, मिलना है, यू नो, समथिंग, सम इंपॉर्टेंट बिजनेस डील. मे बी somebody, some colleague of mine from BYJU'S Exam Prep messages me that Arithro, next class we have to schedule XYZ something. तो ये सब आता है अंडर डेटा. ये जो डेटा है, कोई इंसान नहीं पढ़ रहा. आई होप nobody is, and you and I mean you may be, but I am not such an important person कि somebody will be reading my messages. No. And there are billions of us on this planet. In our country we have more than 1 billion people, so nobody is reading our messages, but there are these algorithms, ठीक है, which crawl through. गूगल में एक टर्म है crawling through. crawl क्या करता है, crawl करके वो एक एक आइटम देखता है, एंड उस हिसाब से एक डिजिटल मैपिंग हो जाता है हमारे इंसान का. कोई इंसान नहीं पढ़ रहा, बट जो भी आप डिजिटली डाल रहे हो, आप गूगल में कुछ सर्च डालोगे, फेसबुक में किसी का प्रोफाइल ओपन करोगे, इंस्टाग्राम में आप किसी के पेज में जाओगे, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख रहा है. शायद वो इंसान नहीं हो, शायद वो सुपर इंसान हो, कोई रोबो हो. बहुत सारे डेंजर्स भी है इस पे, उस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन ये जितना सारा डेटा है, अगर इमेजिन इस देश में हमारे 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, तो 1300 crore लोग हैं, like we say. 130 crore people, more than 100 crore people we have. And on this planet, we have more than 7 billion people, almost touching 8 billion. Many of them cannot afford mobile phones or smartphone or digital device. I take that. Many of them live in remote areas. I take that. But even if 1/4 of the world's population has access to mobile phones or computers, the amount of data generated in a single day from all these digital devices, imagine. और मोबाइल फोन तो चलो एक डायरेक्ट चीज है, बट इसको छोड़ के इवन थिंग्स लाइक द माइक्रोवेव ओवन एट आवर होम, और द वॉशिंग मशीन, और द एयर कंडीशनर, समटाइम्स in modern times even they are digitally connected, so to some source. So there is a system which knows कब AC ऑन है, कब अब हमारा रेफ्रिजरेटर ऑन है. तो ये सारा डेटा कहीं ना कहीं जा रहा है, एंड दैट इज वेयर ये सारा डेटा टुगेदर इज big data. There are terabytes of data which are being generated, trillions of terabytes every day, right? So that is big data, right? Okay, moving ahead then, थोड़ा सा समझ लीजिए. So it is the study, analysis and interpretation of big data for the business growth of an organization. इसमें बहुत ethical concerns भी है, because हो सकता है कोई आपका data misuse करे. Generally the idea behind all this data is to get a broad understanding of the buyer persona. So if you are an 18-year-old student or a 16-year-old student who has asked a few of your friends that what is hotel management, मुझे थोड़ा बताना यार होटल मैनेजमेंट होता क्या है. आजकल सुन रहे, घर पे कोई अंकल आए थे, उन्होंने कहा बेटा HM कर लो,
मुझे वैसे भी कुकिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। परसों मैंने मैगी बनाया अंडा डाल के, ऐसा अगर कोई सवाल किसी बच्चे ने अपने दोस्त से पूछा तो इंस्टेंटली मैं अगर व्हाट्सएप हूं, मैं अगर फेसबुक गूगल कुछ हूं, मुझे पता चलेगा ये थोड़ा एचएम कंसिडर कर रहा है, चलो उसको एड्स भेजो एचएम के। समझ रहे हो मेरी बात? सो दैट इज हाउ टिपिकली थिंग्स वर्क। फैमिलीज व्हेन दे आर डिस्कसिंग लेट्स बाय अ वॉशिंग मशीन, दैट्स हाउ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, एंड यू विल नोटिस व्हाटएवर थिंग यू आर ट्राइंग टू बाय, you will receive ad notifications for similar stuff. Google and Facebook nowadays know you better than your parents, your brother, sister, your children might know, your sibling or your spouse may know you. I know this is a very dangerous a situation, but इसको समझने के लिए हमें आप जैसे मैनेजर्स चाहिए जो एथिकल है, जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉपरली किया है, जिनको सारे हैक्स मालूम है, but they do not do that because of some ethical reasons and because there are controls above you as well. So that is why we need ethical understanding of big data and analytics, right? So it's a combination of business intelligence, data analytics, and computer programming. You need to be good with computers, but other things as well. It's emerging as a unique specialization under the Bachelors of Business Administration. Students are taught to analyze the data and find out the patterns that will be useful in building business strategies. This word is very important, pattern. Okay, nobody is reading the messages. What kind of things are you constantly harping about that gives people an idea? चलिए ये देख लीजिए आगे का। I've already told you all this, but एक बार आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। ठीक है, सो बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स इज बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर फील्ड, जिसमें मार्केटिंग एनालिटिक्स आता है, ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स, कस्टमर एनालिटिक्स, ऑल्सो डिमांड एंड सप्लाई चेन एनालिटिक्स। ठीक है, आपने देख लिया डेटा। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। द रीजन आई वाजंट रीडिंग इट आउट इज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, बट यू गाइस हैव यू नीड टू रीड। अच्छा, 50% चाहिए 12th में, बट मैथ्स इज कंपलसरी बिकॉज मैथ्स के बिना ये नहीं हो सकता। एनालिटिक्स समझने के लिए, सी देयर इज एन आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आई डोंट आर्ग्यू विद दैट, बट टू अंडरस्टैंड हाउ एनालिटिक्स वर्क्स यू नीड टू बी good with numbers. You don't need to be brilliant, but you need to have a grip on numbers. ठीक है, students appearing for this thing and awaiting results can apply. Shortlisted students, this is common like in every other exam. There's nothing completely unusual about it. ठीक है, एक बार देख लीजिए तब फिर भी, and then I'll move ahead to the next one. ठीक है, चलिए I'll use this actually. I should be using this. ठीक है, अच्छा, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं एक बार देख लीजिए। सो आई हैव पर्सनली डन दिस थिंग, क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में मैंने एक सर्टिफिकेशन किया था बहुत साल पहले, अराउंड 8 साल पहले, जो इस लाइन में आप एंशिएंट हिस्ट्री कह सकते हैं बिकॉज ये काफी नया लाइन है, बट नॉनदलेस आई हैव अ ब्रॉड ग्रिप एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ राइटिंग ऑन दिस थिंग एंड आई रीड रेगुलरली फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एंड फोर्ब्स, सो आई हैव एन आइडिया हाउ दिस थिंग वर्क्स. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन दिस. ओबी, पॉम, बिजनेस कॉम, ये सब सारे कॉलेजेस में होता है, सारे कोर्सेज में. तो ये कन्वेंशनल मैनेजमेंट पेपर्स है, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ठीक है, डेटा, ये सारे कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स है. ठीक है, तो अगर मैं यहां तक लू कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, आई एम पुटिंग विद अ सिंगल टिक, कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स जो सारे मैनेजमेंट में आता है. ठीक है, एंड डबल टिक का मतलब है एनालिटिक्स स्पेसिफिक. So let's see how many of these are specific to this thing. Business modeling is specific, data environment definitely, data mining, this is again conventional operations, हर एक में होता है, although इसमें थोड़ा सा अलग है ops, but nonetheless it's there in everything. Once again, this is analytics based, definitely. Business intelligence, certainly. Data visualizing, it's core. Predictive analytics, big data analytics.
Business laws is again conventional, but here there's a greater focus on internet-based laws, ठीक है? Whereas बाकियों में it is more of this thing, and programming for analytics. So this is basically, I've given you a brief this thing. तो एक बार देख लीजिए इसको आप सभी. मैं जरा बैठ जाता हूं थोड़ा साइड में, बैठ नहीं खड़ा रहूंगा, बट थोड़ा साइड चला जाता हूं ताकि आप पढ़ ले. सिंगल टिक का मतलब है कन्वेंशनल सब्जेक्ट, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स जो हर एक में होते हैं. डबल टिक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मींस दैट इट इज अ एनालिटिक स्पेसिफिक वन. सो पहले के जो 5-6 सब्जेक्ट टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं, दे आर कन्वेंशनल पेपर्स जो हर एक मैनेजमेंट कोर्स में आता है. बट एनालिटिक स्पेसिफिक टॉपिक्स are business modeling, data environment, data mining, and all those on the right hand side. Predictive analytics is when you're predicting how the market will behave based on recent trends. You can't go too far back because technology nowadays changes and that leads to behavioral changes every now and then. But recent जो trends है, IPL का जो इस साल का जो viewership था, कुछ हद तक we can predict how it will be the viewership for the upcoming T20 World Cup because it is the same sport in the same country. The similar players are playing in it. So similar set of players. So again, you can say that that is predictive analytics. Data visualization is how you show the data. Data बहुत गंदी तरीके से दिखाया जा सकता है. बहुत सारे नंबर्स आपने देखे होंगे फिल्मों में, कोई मैड साइंटिस्ट है जो नंबर्स बहुत लिखे जा रहा है, बट हम वो नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि बिजनेस यूसेज हो. बिजनेस यूसेज के लिए प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. सो इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर ताकि the CEO in the company, the CEO may be a slightly older person who wants the final bottom line. That person is not interested कि आपने कैसे करना है, but उनको फाइनल रिजल्ट दिखना है. तो उस फाइनल रिजल्ट के लिए आपको ऐसे दिखाना है ताकि वो सुंदर दिखे और उनको पता चल जाए किसी को भी टीम में जो सीनियर लेवल में है. बिजनेस लॉज हर एक उसमें रहता है, बट आपको यहां पे जंगल के या फैक्ट्री के लॉज नहीं जानने. आपको स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल लॉज है इसके वो जानने, नेशनल एंड इंटरनेशनल. जहां पे डेटा की बात है, इंटरनेशनल भी जानना है बिकॉज डेटा फ्रॉम वन कंट्री जो मैं इंस्टा में भारत में यूज कर रहा हूं वो दूसरे देशों में भी विजिबल है. सो एक्सेप्ट चाइना बिकॉज चाइना लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर बैंड. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. आई होप एवरीबडी हैज सीन. मैं जानबूझ के साइड हो गया स्क्रीन से ताकि आप सब्जेक्ट्स को ठीक से देख पाए. प्लीज गिव मी अ कॉन्फर्मेशन you've seen. So on that note I will just move ahead. ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे पहुंचते हैं. करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द कोर्स क्या क्या है. यू कैन वर्क एज अ डेटा साइंटिस्ट, as a big data analyst, big data engineer in a reputed MNC. Lots of MNCs take them. Any sector nowadays requires data, whether it's a food sector, hospitality, tourism, sports. Sports में होते हैं, you know, Moneyball एक मूवी थी इन चीज़ों पे. तो हम if anybody seen the web series Inside Edge, उसमें दिखाया जाता है, you know, कैसे जो analyst है, जो statistician है, वो एक एक चीज़ they can break it down, you know, bowler का, you know, hand movements, you know, batsman का. So that gives you a great idea on how this works. ठीक है. सो स्किल्ड बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, रिटेल सेल्स एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट. सो ये सारे प्रोफाइल्स है, एक बार देख लीजिए. देन आई विल मूव अहेड. Okay, job area. Let's see what kind of job areas you can get. MNCs, manufacturers, retailers, IT firms, telecom, consultancies. Salary between 4 लाख to 15 लाख. तो सारे kind of ranges है. Data mining में शायद 4 लाख मिले, analyst में 15 लाख. तो you have all kinds of you know job profiles like in any field. I mean, there's nothing unusual about it. किसी भी line में you have entry level salaries, you have higher level salaries depending on what position you got selected in. ठीक है. अच्छा, what are the top colleges? Let's take a look, please. Geetam in Hyderabad and in Visakhapatnam. You also have Prestige Institute, which is in Indore. BML Munjal, which is in Gurugram. Munjal Group is the sponsor. Munjal, you know, the ones who run Hero Honda.
Then you have again another Geetam. This is in Bengaluru. In Bengaluru, Bangalore, of course, is the IT capital of the country. That's like it's known as the Silicon Valley of India. So wahan pe you have several of these colleges. Mount Carmel, for example. You've got ITM Institute of Management in Gwalior, Madhya Pradesh, northern MP, not far from Delhi. Then Amity in Noida. Christu Jayanti College again in Bengaluru, and you've got the KL University Business School in Guntur. These are some of the colleges. Yeah, these are they. So you will see this is an unconventional list. You don't have the usual IIMs, the NLUs, the CRIS, the Symbiosis. You don't have that list because this is a very new cutting edge thing. So all these colleges which have placed themselves in a position where they are going to do this well, you can be rest assured that if they've cracked this, in the next couple of years, these will all become top institutes. Many of them already are, and I'm not suggesting they aren't, but this gives them a cutting edge lead over others in one of the most upcoming top areas in the world right now. ठीक है, चलिए, let's move ahead then. Okay, so this is a batch. I'm more or less done with my content. So if you want to ask anything on the content side for the PPT that we had, so do feel free to ask me. कुछ भी अगर उससे related पूछना हो तो ठीक है। तो ये हमारा नया बैच है, आपको फोन नंबर दिख रहा है बॉटम ऑफ द स्क्रीन, उस पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ईमेल अस एट द आईडी विच इज प्रेजेंट। And this is a session, please do not miss, on 18th of October, 8 baje. Vedant Ramteke, he's been one of our star achievers. He's made it to the best HM college in the country, which is IHM Pusa Road, which is in Delhi. So, do not miss this session. It is one of our achiever sessions. These are some of our star faculty who are taking the different batches. So it'll be great experience for you guys to study with these trainers. And of course, we also have this app. Do download our app. I had just taken a session some time back. I'm running this series nowadays on vocabulary, so you can, enjoy this one. Okay? चलिए. So that's pretty much it from my side. कोई भी doubts हो, आप पूछ लीजिएगा. मैं बाद में आपको respond कर दूंगा chat में. So thank you everyone, and see you all very soon. Thank you everyone.